मणिपुर के इम्फाल ईस्ट के कुंद्राकपम में हूँ मैं और मणिपुर के हालात पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। लेकिन हम लोग तो दिल्ली से आए हुए रिपोर्टर्स हैं जो यहाँ आते हैं 1 या 2 दिन के लिए रिपोर्ट करके चले जाते हैं। जो यहाँ के रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, उनकी दिक्कत के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आवाज़ें आपको नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं सुनाई देंगी। मेरे साथ शांति सलाम है। She has been a journalist for more than 10 years. She is, of course, a Manipuri here. And I'm, Shanti, tell me first of all, how are you holding up? How are you doing amidst all this conflict? Smita, it's very difficult. It's more than 4.5, almost nearly 5 months now. And you cannot imagine, you cannot describe in words how difficult it is for people. There are lots of hardships because there are spirals of violence and shootings, encounters, and then so many difficulties we all are facing here. Apart from that, there is also internet cut, and it's really difficult. I'll come to the internet cut in a bit, but you mentioned, of course, शांति मेटी हैं और आपको पता है कि मणिपुर में जो पूरी की पूरी लड़ाई है इस वक्त, उसमें मणिपुर और मेटीज़ और कुकीज़ के बीच में ये घमासान जारी है. As a journalist, is the journalism camp also divided? That the cookies don't believe what the Métis journalist is writing, the Métis don't believe what the cookie journalist is writing. Has that added to your problems? See, many people have blamed the Métis journalists as a Métis media recently. But Professor Bimol Akoizam also had clearly spoken in one of his speeches. It is understandable, but not justifiable, which is correct. How can we go and report from the cookie dominated areas? And it's the vice versa. And the internet ban has taken a toll on us. Even though Manipur has been called a paradise for reporters for long, but then that implies there is nothing short to report when it comes to burns, blockades, abuse and encounters, genocidal attacks, and curfews, etc., brought by the government and the public. But then the internet ban in the state, it's like, apparently it is like a whipping boy for the state's failure to contain law and order situation in the state. And with the internet cut off, the entire generation is gone back to the dark ages. Because it's not only the social media, internet, it doesn't mean that it's not only the social media. Because which the state is blaming for the spread of the unrest. It is also for other transactions, online jobs, and reporters are finding it hard to file a story or transfer the covered, on the spot wala events that we have covered. It's very difficult. I had so much of difficulty, and even today, till now, I had to file my reports through text messages and phone calls. So imagine how difficult it could be, and then people staying here away from Imphal area, we had to travel to Imphal in DIPR, to get access to it, and the lack of this internet. I mean, I told you, it's the entire generation has gone back to dark ages, and it's not only for social media, it's all for other reasons also. Transactions, commerce, and all the knowledge are this time it's internet based now. Absolutely. DIPR का इन्होंने मेंशन किया, जो स्टेट की डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस है, वहाँ पर वाईफाई का प्रावधान दिया गया है. जो जर्नलिस्ट जाते हैं वो जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन काफ़ी बारी जब आप सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी याद रखें कि एज अ जर्नलिस्ट आप जब कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्ट करते हैं तो स्क्रूटिनी भी उतनी ज़्यादा होती है. इसका मतलब है कि सरकार भी नज़र बनाए हुए हैं आप पर कि आखिर आप क्या फाइल कर रहे हैं, आपने किससे बात की है, तो वो आपके काम पर उसका भी असर पड़ता है. ये मैंने कश्मीर से रिपोर्टिंग करते हुए भी देखा है, मणिपुर से देख रही हूँ. इंडिया एक्चुअली इज लीडिंग द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू कटिंग डाउन ऑन इंटरनेट, व्हेन इट कम्स टू शटिंग डाउन इंटरनेट. और सोचिए हम जब दिल्ली में रहते हैं, हम किसी बड़े शहर में या छोटे शहर में रहते हैं जहाँ इंटरनेट हमेशा मिलती है हमें, आप हर 2 सेकंड पर आप ट्विटर चेक कर रहे होते हैं, फेसबुक चेक कर रहे होते हैं, आप व्हाट्सएप पर बात करते हैं, फ़ोन उठाकर बात करना, कॉल करना, नॉर्मल वॉइस कॉल करना आधे लोग जो हैं वो भूल चुके हैं. तो SMS पर अगर आपको रिलाई करनी हो रही है, आपके पास
पास ईमेल का प्रावधान नहीं है, गूगल का प्रावधान नहीं है. इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट. सो फाइनली शांति, जस्ट वन क्वेश्चन, बिकॉज you're reporting here. You have gone to some of the Métis relief camps around the area. What do you feel are the biggest challenges that people who have been displaced and are living in the camps are facing? What kind of help do they need? Do you see any government aid, government help being sent their way? See, as far as my this experience is concerned, I have been volunteering for these relief camps in Imphal East area here in Kundrapam. There were 16, but all of them have shifted recently to the prefabricated shelter homes in Sajiwa. But apart from them, there are like many of them have issues with basic amenities. Like when it comes to this conflict, people only see food and clothing when their houses were burned down. But there are other basic things like sanitary napkins for women. Children have stopped going to schools, and even if they go to schools now that the schools are open, their parents are finding it difficult to send the students, children to the school, because they hardly have any livelihood means, But then some have started, engaging themselves with livelihood activities to sustain, but they don't have any capital money or to invest on it, and there's hardly any government aid is very minimal. And since there are so many of them displaced, around 60 official number, 60,000, so you can imagine 60,000 से ज़्यादा लोग आज बेघर हो गए हैं मणिपुर में. दोनों समुदाय के अगर आप देखें, कुल मिलाकर 195 लोगों की जान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर गई है मणिपुर में. और जीना जो है वो दुभर है. ख़ास करके आप अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर कैसे लौटाएं फॉर दोज जो हु आर लिविंग इन द रिलीफ कैंप्स. ये सवाल उनकी ज़िंदगियों का है, ये सवाल उनकी लाइवलीहुड्स का भी है. आगे क्या करें, कैसे नौकरी करें, कैसे पैसे कमाएं, तमाम ऐसे सवाल है. तो यहाँ जो है आप मणिपुर में आएंगे, मैं यहाँ की खूबसूरती के बारे में क्या कहूँ. मैं पहाड़ देख रही हूँ, बादल देख रही हूँ, आसमान देख रही हूँ, लेकिन इन खूबसूरती के पीछे जो दर्दनाक तस्वीरें इस वक्त छिपी हुई हैं, जो दर्दनाक कहानियाँ छिपी हुई हैं, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया से नदारद है. आप इक्का दुक्का अखबारों को छोड़ दे जो लगातार मणिपुर की स्टोरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया को छोड़ दे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मणिपुर में कोई दिक्कत चल रही है. या आज लगभग 5 महीने होने को चले हैं. 3 तारीख को, अगले महीने की 3 तारीख को 5 महीने हो जाएंगे. ये हिंसा जो है इसने मणिपुर को पूरी तरह से पाट के रख दिया है. वैली और हिल्स की जो दूरियां हैं वो अब और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन कोई राजनीतिक समाधान नज़र नहीं आ रहा है. ना कोई जवाबदेही किसी की अभी तक तय की गई है, ना मुख्यमंत्री, ना केंद्र में गृह मंत्री या इंटेलिजेंस, किसी से भी नहीं. और प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ 3 बार ही जो है अब तक इस पर कोई बयान दिया है, वो भी बहुत ही अश्योरेंसेस थे, जस्ट ब्रीफली. कोई डिटेल ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई जो है उसमें जवाब नहीं थे कि आखिर ये हिंसा कैसे भड़की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है. मणिपुर के इस इम्फाल के क्षेत्र में मैं स्मिता शर्मा. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.